where function, what is the condition? Where co-traveler count is greater than 0, then it will give a value of 0. Means co-traveler count is not 0. Wait, it's greater than 0 means it's not 0. It must be something 1 or 2 or something. More than 1, more than 0. Then it's 0. Means that solo traveler flag will be 0. It's not a solo traveler. Else it will be 1. Means it will be a solo traveler. Okay? So, what will the opposite of greater than 0? Excluding the greater than 0, it means 0. So, when we have the co-traveler count as 0, it will be a solo passage. So, this is how we create a new variable using the numpy as well. Here we are using the where function using the numpy library. Okay? Okay. So if it is taking time, you can use short form of the variable as well. Let me know when we are done with this. You understood the logic for this, no? Got it? Fine. Any question from here? The numpy. If you code it, Python will get the numpy library. Travel count. लिंक भेजा तूने ग्रुप में? हाँ हाँ लिंक भेजा है? लिंक भेजेगा तब तो देखेंगे। लिंक भेज ग्रुप में भेज लिंक। Either 1 or 0. It brings you a pseudo traveler or not. पानी पीना है मुझे। तुम्हारा जो लाइव चल रहा है लिंक भेज दो भाई। इसको रख दो अच्छे से सामने जो जहाँ पे भी रखना हो आज तो यहाँ भी अच्छा आया है। यहाँ पे दिखा यहाँ पे
That final zero will doesn't mean that solo travel count. It's not solo travel count. It's a flag variable. Okay, an indicator variable, value of variable. One means it's a solo travel. Zero means it's not a solo travel. It's not count. It's a flag. अच्छा तुम ही दिख रहा है लिंक तो पहले फॉरवर्ड कर दो अच्छा ये बताओ ये सारे कोड कहाँ पे सेव रहेगा अच्छा कहीं पे सेव करना नहीं होगा ऐसे कोड करके तुम लोग लिंक नहीं भेजे अभी तक अच्छा नहीं आएगा खराब काम को प्रमोट करना चाहिए Okay. I think we can move forward. Now this one you don't need to do it. I just give you the idea of it. You can do it on later actually. So again you can create a age group variable. What happens sometimes that discrete values of age may not be able to predict your outcome, but age group can. So there is lot of you can try for modeling. We try with the raw variable, we try with the categorical variable like that. So again we are using np.select and putting the conditions on the age variables. If the age variable is less than 15, then it will give you 15 or below. If age is between 15 to 25, so we are just putting the conditions and creating the labels of your new variable age group. You can do it. Okay. Just run it and see. So it's recommended after each operation, calculation, manipulation of the data, you have to check whether that operation is implemented or not, or there is some problem with that. You have to keep checking your data whether your operation was executed or not. So can you please show the code again? Which code? That. The age group? Yeah. Okay. So if you want, you will take a picture of it and you can make it later. You can circulate it to other people as well.
Okay. Now after creating the age group variable, we just wanted to see the distribution of the variable. Now you must have heard of the dummy variables. Okay, for all the categorical variables, we prepare dummy variables for modeling in general. Even if you don't prepare the dummy variables, still you can build a model. Okay, so this is how you create the dummy variables. Now this will again use your pandas library because that does a lot of data manipulation that is done by pandas. So what we are getting, pd pandas dot get dummies. We want the dummy variables for this data set. And what was the column? For the column passenger class. Okay, so now we'll see. So this will be done only for the categorical variables. Now if you see here, we have created the dummy variables. So suppose a variable is having three categories like passenger class. If we create dummy variables for that, there will be three dummy variables. It will be like a matrix. Okay. If a passenger belonging to class 3, that cannot belong to 1 and 3. It's like 0, 0, 1. Okay, 1, 0, 0. So it's the dummy variable that we have created for passenger class. Okay. Now you can do one more thing. You can do all the exercise. Okay. Okay. So in place of creating dummy for single variables, you can do one thing. You just create data underscore Titanic 4 pd.get dummies data. In data, you can put your the final data. I think that is data underscore Titanic. This one. I'll just okay. So we are not going to run this. Please, what we can do? Data underscore Titanic 4. We are making the dummies for data underscore Titanic. What were the columns? Now we can put all the columns all together. So we created the dummy for P class already. So we are not going to add the passenger class. We will add the all other variables, separating with the commas for the all categorical variables. This one you can write where I am writing this one, where data underscore Titanic 4 is written. Okay, so we are creating one new data set, data underscore Titanic 4 is equal to pd dot get dummies for the old data, that is data underscore Titanic, and columns equals to in big bracket all the features, all the categorical features for which we want a dummy variable. Just try this one. Do we have some other categorical variable as well? So we can add that in that. I think yes, we have. Age group you don't have. Okay. Gender you have put age group. One more you can add in this code is solo traveler. Okay. Okay. So we are creating a new data set, data underscore Titanic 4, and we put all the categorical variables with this. Because you have not created age underscore group yet. Age group nahi banaya na abhi. It will not take, it will throw an error because we don't have that.
variable with this. We'll just remove it. Okay. We'll create dummy variables for these variables. ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे ऐसे लेकर वो करना पड़ेगा। हाँ? क्यों? ऐसे मस्त नहीं होना चाहिए। चलेगा ना? बट ये रॉन्ग क्यों आ रहा है? Let me know when this command is done. So we travel नहीं है इंडेक्स में इनका क्या कंप्लीट क्या करते हैं? आपको सिर्फ लैटिनिक 4 वाला कमांड रन करना है, ठीक है? ये ऊपर नीचे वाले जो दो है ना, ये नहीं करना है। जहां पर भी हैश लगा कि कमांड कमेंट कर दिया मैंने, ये नहीं करना है, सिर्फ ये करना है। ठीक। आपका लास्ट सेव्ड जो डेटा था दैट वाज डेटा अंडरस्कोर कैटेगरी, इतना रखिएगा। और यहाँ पर अगर किसी ने मान लीजिए डेटा अंडरस्कोर कैटेगरी का नाम कुछ और रखा है, पहले डेटा का स्मॉल में है या ये स्मॉल में है, तो आप वो डेटा का नाम एग्जैक्टली यूज करिए यहाँ पर जो आपने बनाया है। ओके सोलो ट्रैवलर जो है नॉट इन इंडेक्स ये दोनों समझाते हैं, इसके में गलत कर जाएगा। कुछ इश्यू है ब्राइटनेस थोड़ी कम है, ये दिख नहीं है, पेज का इफेक्ट है, इसको छोड़ो। नॉट इन इंडेक्स्ड इंडेक्स नहीं उसी जरूरत नहीं है, रन करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता है ना, जो पहले वाला 2 और 3 में क्या किया गया था, डमी बनाया गया था ना। अभी हम एक में ही डमी बना रहे हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हम इसलिए कि सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, ये बना लिया था सोलो ट्रैवल आपने बनाया था, नहीं बनाया था। तुमने क्या क्या बनाया है? अगर सोलो ट्रैवलर नहीं बनाया तो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? आप चाहो तो बना सकते हो, ठीक है? सोलो ट्रैवलर बना लो तभी चल जाएगा, ठीक है? एक बार बना लो, सोलो ट्रैवलर 2 बार आ रहा है, हटा देना। ये वेरिएबल बनाया था सोलो ट्रैवलर। वहाँ भी आया है, हाँ गलत है, फिर उसको हटा देंगे एक बार, ठीक है? क्योंकि सोलो ट्रैवलर इम्बाग स्टेशन जेंडर और भी कुछ था, आई थिंक पैसेंजर क्लास भी तो रहेगा ना यहाँ पे, एक मिनट क्लास भी रहना चाहिए क्योंकि अच्छा पैसेंजर क्लास का हम पहले बना चुके हैं, है ना? इसके पहले बनाया था पी क्लास। और जो पैसेंजर क्लास का बनाया था डमी, उस डेटा का नाम क्या रखा था? 1 अच्छा 1 किया था उसको, ठीक है? आई थिंक फिर सबने ही 1 किया होगा। सर एक बार आपको रिपीट कर दे बी क्लास वाला जो मिस हुआ है बहुत। बट पी क्लास का जरूरी थोड़ी है कि पी क्लास है। ओके, ये जो we need to create dummy variables for the fractional class. You want to redo it or after this step you want to do it? ये वाला कमेंट, ये कोड कितनों ने रन कर लिया है? डेटा अंडरस्कोर कैटेगरी 1 वाला नहीं किया है? इसको ट्राई करो। डेटा अंडरस्कोर कैटेगरी 1 लास्ट वाला भी डिलीट मत करिएगा, जो आप लिख रहे थे उसको रखिए। उसके ऊपर एक नया सेल डाल के आप ये बना लीजिए डेटा अंडरस्कोर टाइटैनिक रेडी डॉट गेट डमीज पैरेंथेसिस में डेटा देन कॉलम। किस कॉलम की बात कर रहे हैं? कॉलम विद पैसेंजर क्लास।
तो नेक्स्ट कैसे ऐसा चलेगा? कैसे आ रहा है यहाँ पे तो नहीं लिखा है, ये जो दिखा रहा है तुम्हारा यूट्यूब में यहाँ पे तो नहीं आया है। क्लिक किए हैं ना, इसलिए दिखा रहा है कि क्या कर रहे हैं। क्या बिना कंसेंट के वीडियो कोई बोले दिखा? मैं सर को तो नहीं सर को पता है। सर ने ही बोला है। ठीक है, फर्स्ट ईयर तो वैसे भी बदनाम है कंप्लीट करना। ये बन गया सबका डेटा अंडरस्कोर डायनामिक वन, ये आपने चला के देख लिया है ना। अब हमको क्या करना है, ये कर लिया सबका, किसी का इशू है कुछ क्या? एक बार जो जो जिसका वहाँ हो गया है एक बार देख लेंगे सबका हो गया है। We're done with this. We have created a dynamic one. क्लास एक ही बात। जिसको मन है अच्छा तो यहाँ से पास करके देख ले रहे क्या हैं। कर रहे हैं? दिखा नहीं रहे हो। आपको आपका छोटा हुआ है। ये वीडियो से करिए कल वाला भी है, कल वाला जो छोटा है। आज मैं करना चाहिए। पहले आया होता ना, पहले 9 बजे 10 बजे तो बस स्क्रीन ऐसे नहीं आता, वो स्क्रीन शेयर। अब क्योंकि आपने डेटा अंडरस्कोर टाइटैनिक वन पहले बना लिया है, अब उससे आपको प्रोसीड करना है। तो यहाँ से डेटा अंडरस्कोर टाइटैनिक की जगह डेटा अंडरस्कोर टाइटैनिक वन कर दीजिए। तब वो ऑलरेडी वहाँ पर पैसेंजर क्लास का बन चुका है डमी, और उस डेटा को ये रिफर करेगा। We have seen dropping the variable as well. We dropped one variable, that was cabin. Okay. So similarly, we can drop multiple variables in one command as well. डेटा तक हो जाए। वन फिर से लेंगे फिर टाइटैनिक ले रहे हैं और वो सोलो ट्रैवलर एक बार सोलो ट्रेवल बनाए कब है? आप यूज़ हो सकते हैं। लैपटॉप लाएगा देख लें बहुत बढ़िया हमारे में भी एज आ रहा है कैसे? एज कैसे आ रहा है? एज मेरे में से क्यों आ रहा है? आपको नहीं बोलना ये वैसे कर रहा तू। जोल जोल जो नहीं चाहिए खाओ या नहीं। पीछे पास कर देते एक बात बताओ, मेरे में एज ऐसे क्यों आ रहा है? तो अभी फाइनल डेटा जो हमारा
with the dummy variables, we have the data underscore titanic 4. This is our final data on which we will build the model. अच्छा आपका गलत है इधर तो है एज को डिवाइड किया है क्या? नहीं अच्छा एज ग्रुप वाला बनाई है ना आप नहीं, ये बड़ा वाला जो था एज ग्रुप नहीं बना, एज ग्रुप में छोटा सा बनाया था तो ये नहीं बना रहा। इसीलिए शायद Now since this Python environment will be, our data will be lost when we close the session, and if you want to export this data to our local machine, what we can do, we can select our data underscore dot to underscore CSV. You want the data to be exported to CSV, and we will give the destination, and that I'm just telling you, you don't need to write it. I'm just giving you the command for this, that you can use it for exporting the clean data basically to your local files. Now, exporting CSV data to cloud means your current environment that you are working on. So you have explored the SNS library. You can also explore for KDE plot. You just write it somewhere, KDE plot. Okay. You can try it on your own to get the density. Okay. Probability density distribution for your variables basically. Okay. कोड ही सर से ऐड कर दीजिए हम कर लेंगे So basically it's just exploring the bivariate distribution with the help of bar chart between the passenger class and the survival probability. Okay. So if you see it here, that move change so here you can clearly see the passenger class 1 is having the highest survival probability here as compared to class 2 and class 3. So why we are doing it? So when we have n numbers of variables, we want to pick the variables those are most important for our target variables. So we use the bivariate distribution with all the features with outcome variable and see if changing the values of the independent variable, like class, are we having a different probability of that outcome variable or distribution. Okay, suppose in passenger class you can see in this class 3 there is a comparatively less survival probability compared to class 1 passenger. So this is how we do the exploratory data analysis to understand which variable possibly be the good or strong predictor for our model building. Okay. I think for this. Okay. I think you can try it. Okay, later. So you are using the data. So similarly, I'll just show it. Okay. So again, this is a survival probability for the embarked station. So you'll see from the Southampton end, and I think this the last embarked station, the probability are not that different, but for this the second embarked station, the probability is high.
Similarly, we can see the box plot for solo traveler and survival probability. So these are the solo travelers. Solo traveler were having less probability of survival in Titanic accident because whoever was having some co-passenger, possibly their children, wife, or older person, they have that benefit for getting the boats, basically the lifeboats. Similarly, for gender, obviously female were given the um, disparity. You know, suddenly started laughing. Okay, that's not fair. The second. Okay, so this is what data is saying. Okay, so and that makes sense. No? Now our data underscore 34 is our final data set. Now from here, uh, you try this one. Okay, these are the columns. Columns basically is, but you need to do one thing. You need to remove the age group because you haven't created it because we have the limited time. So I skipped a few steps. What you can do is just put this. Okay. Now, how you build a model? When you create dummy variables, suppose for gender, you had two dummy variables, sex underscore male, sex underscore female. But while giving input to the model, you will put only one category of it, only one dummy variable. So for gender, it's supplying gender male. So you will get the coefficients of your output with respect to female. So this is how it works. So similarly, fair was basically fair was a continuous variable, quantitative type. You can add one more variable. No, it is already there. Age, because age group we don't have. So we'll put the age in this. Okay. Just write it this one. What we are doing here, we are creating one list. You must have heard of list and tuple. Basically, in big bracket, we create list in Python, and in a small bracket, we create tuples. Tuples are immutable. Basically, we cannot change it once we create a tuple, but in list we can update it later. So basically, we are creating the columns COLS all in small. This we are giving actually. Then इस ब्रैकेट में हम सारे वेरिएबल का नाम डाल देंगे. सारे वेरिएबल का नाम कैसा? जो भी कैटेगरिकल है उसमें से हम एक कैटेगरी को नहीं डालेंगे जिसके रिस्पेक्ट में हमें रिजल्ट्स चाहिए. तो सोलो ट्रैवलर 1 बना था, सोलो ट्रैवलर 0 बना होगा. So we have put solo traveler 1, replace remove solo traveler 0, passenger class 1, 2 will get the results with respect to passenger class 3. Similarly, embark station C, embark station S, we have put and left the third one. Similarly, for the sex, male, female, we are not putting it. स्केल ये स्केल नहीं होता है. कुछ नहीं जानते.
कितने लोगों का बचा है ये कॉलम बनाना? हाउ मेनी आर लेफ्ट विद दिस कॉलम कमांड? हमें अटेंडेंस को यार करना चाहिए। All done with the column command? Here, everyone is done with the column command? क्यों आ रहा है इधर? इधर भी नहीं हो रहा भैया। अच्छा अटेंडेंस को हुआ नहीं तो काम से क्यों आ रहा है? विकास भैया उनकी बोलिए इधर भी अटेंडेंस नहीं हुआ। गाड़ी दी दे रहा गाड़ी हो गया अटेंडेंस की जरूरत है। नहीं, इसमें क्या गलत है? क्या यस बेटा अटेंडेंस बदल है। 2 वाला है, 2 फाइनल देखो ये जो है ना डेटा टाइम 2 वन कब वन भी नहीं आ रहा। Okay, I think everyone is done with this columns creation. Now, what we are doing here in the next two codes, we are putting the x. Those are our features or independent variables. X, what is x? Data underscore tagging 4. और उसमें क्या चाहिए आपको? We need the list of the columns. Which columns should be there as a features or independent variable. So we are creating one object x and object y. What will be the object y? Our target variable. What was our target variable? वही तो पता नहीं। Survival status. So we have created two objects x and y, and for y our dependent variable or target variable was survived. So now we have created our both the objectives. We have separated our outcomes and we have separated our all the independent variables or features. Now we have two objects with us. Using these two objects, we will train and test the model. Let's create this x and y. Done with the object x and y, everyone. कितने लोगों का नहीं हो पाया अभी ये? बता सकते क्या? कोई है इधर जिसका object x सरवाइव and y नहीं नहीं रहा है बन तो पाया? कैसे बोलते हैं? कोई है इधर? क्यों नहीं बना? क्या कर रहे थे? जिसका नहीं हुआ बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप बोल दोगे कि नहीं हुआ तो शाम को स्नैक्स नहीं मिलेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है, वो मिलेगा। हाँ? कर लिया पेन आज क्या उसी पेन आगे क्या तो ठीक है? पेन Shall we move forward? कुछ नहीं कर Okay. Now you want to see the columns? You can from here. This is just the columns that we have created. लग जाएगा भैया, लग जाएगा। Okay. Characteristics
अरे भाई बहुत मेरा तो हो गया। देखो सही कहा है कि सोलो ट्रैवलर ये नॉट इन इंडेक्स, तुम्हारे इंडेक्स में नहीं है। वो तो इसे हमको पहले बताया। सर्वाइव अब जाए आज आप तो सीएस को कभी नहीं आया। इतना सारा लोग मैसेज छोड़ के रहते हैं। बड़े लोग हैं बेचारे। मैसेज ये क्या है? अच्छा वो डेटा तुम्हारा बिजनेस वो है क्या? गिटहब में तुम भी आईडी बनाते हो? मैंने भी सब Okay. From here, from sklearn, okay, this is the scikit-learn library of Python. That is from sklearn.model selection. We are importing train test split. So we need this train test split function from this scikit-learn. So all the machine learning models libraries are there in scikit-learn library basically. So from sklearn.model selection, we need to import train underscore test underscore split. So just run this one. उसको के लिए इसके लिंक पे आपके लिए आजकल के बच्चे बिगड़े हैं। अभी जितना कोड आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये पूरा आप लिख लो. हाँ देख लीजिए। So this part is commented. You don't need to write it. This is commented. So wherever you find the hash, that will not be executed. That will be a comment basically. Huh? x2 y2 तो हमने xy तो बनाया ही नहीं है, क्या ही कमाल काम करेगा। वही तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट डाटा कनेक्टेड क्या ही रिग्रेशन यूज कर रहा है। आज के बच्चों को मार डालेंगे लोग। और अभी देखेंगे रील्स नहीं आएगा डाटा में और आए नहीं। तो
redundancy. अंडरस्कोर वन बनाए थे बच्चे यहाँ पे। ये आशुतोष आशुतोष अंडरस्कोर वन आशुतोष 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 कल मैं आई थी बट मेरा अटेंडेंस नहीं हुआ। भैया को मिलती है आप यहाँ तक इसको करना जहाँ पर हमने x2 और y2 बनाया है ट्रेन के लिए। x हमारा ओल ऑब्जेक्ट था, x में से हमने x2 बनाया और एक x3 बनाएंगे टेस्ट के लिए। अभी हम बना रहे हैं ये ट्रेन के लिए, x2 ट्रेन कॉलम्स 2 डाल दिया, ये कॉलम्स 2 हमने यहाँ बना दिया है। आई थिंक ये दिस कॉलम 2 इज सिमिलर टू कॉलम्स जो पहले बनाया था, आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। x2 ट्रेन हो गया। अभी ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला मत करना, तो फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपने बहुत पहले भी किया हुआ है। तो अभी हम लोग एक मॉडल जो मशीन लर्निंग का एनसेम्बल्ड मॉडल है रैंडम फॉरेस्ट, उसको करके देखेंगे। दैट इज बेस्ड ऑन द डिसीजन ट्री। सो वी यूज n number of decision tree and based on that n trees we take a decision based on maximum vote, ठीक है। जैसे वो जो 100 ट्रीज हैं उसमें से कुछ बोलेंगे कि ये सर्वाइव करेगा या डेथ करेगा हमारा पैसेंजर, सो इट विल कंसीडर द मैक्सिमम वोट। if voting of survival is higher, it will say that passenger will survive, like that. So you just create this one, x2 train and y2 train. मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस कब का है? ये चल रहा है ना? मैं जा रहा हूँ। बाकी तो Let me know when the train data is completed with x2 and y2. These are the train partition. As we were talking about yesterday, it was we built or train a model or training data set and we test it on a different data set, a different partition of a data set, that is testing data. How many of you have completed this x2 and y2? How many of you were able to execute this x2 and y2? Can you help? Okay. So we got the training data set for training the model. We will move forward now. So I'm skipping this logistic regression and we will try to build one random forest model for this. Okay. Okay. Random forest.
let's just नेक्स्ट ISP कहाँ है? अभी आपने ट्रेन और टेस्ट ट्रेन के लिए बना लिया। अभी आपको क्या करना है, ये तो कमांड आप लोग चला दीजिए, exit test, that is the test data for the column 2 and y3 test equals to test underscore survived. Survived was one object that we had. यहाँ से train हो गया था. Now this is the testing part. ओके अभी चल रहा है। बस 10 मिनट में क्वेश्चन आंसर सेशन में लंच की बात है। So let me know when you are done with this testing part. So we have created this object x3 and y3 for test. Okay. So okay. So there are few things you have to import again. This is from scikit-learn. In symbol you need to import the random forest classifier. Also you have to import the classification report from this. So I just put it together. You can run these two codes here. So as I told you, that this scikit-learn library is for
all the predictive models that we use. So when the best thing in Google Colab is when you start writing some library or code, it will give you the suggestion with the correct name. You can just simply click it rather than typing it. So from scikit-learn.ensemble, we are importing random forest classifier. Okay. And from sklearn matrix import classification report. When you start typing, it will give you the suggestion with the correct name actually. So in random forest, since it is case sensitive, both R in random and F in forest are in uppercase, and classifier C is in uppercase. Are we done with the importing of these two libraries? Okay, so we can move forward here. We imported this here, and here we are basically training the model. Okay, on your training data set. Then object was x2 and y2. X2 was your features data set, and y2 was your outcome variable. So here we have fitted your random forest model. You can use this CLF is equal to random forest classifier. It will automatically give you a suggestion. In bracket n estimator is equal to 100. What does it mean n estimators is equal to 100? Means we want 100 decision tree to be trained on which we want to make a decision through the random forest. So it can be 100, 1000 or something. It depends on how big your data is. So maybe if you check with the 100 and you check the accuracy, if you again try with 5000 trees and check the accuracy, if the accuracy doesn't change that much, it's not necessary to go with the higher number of percentage, because after some point it will be stable and give you the more or less the same accuracy of the model. So here CLF is R model. We have given this name R. You can change it to your convenience. So we have fit this random forest. Now it comes to performance of the model. We have trained on the trained data set x2, y2. Now we want to predict the data. Now CLF, through the CLF, the trained model name is CLF. You want to predict for the testing data set. You want the prediction of the Y. If we don't fit, we have fitted. Now that we talk about fitting. Whenever you just call it training. So both are the same thing. So now from sklearn you are importing the matrix. Matrix gives you the accuracy basically. Now we want to test the accuracy. We want to evaluate the model using the accuracy on the testing data set. There can be a scenario where your model is performing very well on training data set, but the accuracy may drop significantly in testing data set. So that most of the time that is the case of the overfitting. Have we done up to importing matrix? Have you imported? No. From sklearn import matrix. This
fitted this model. Now we will just building the accuracy of the model here basically. Anyone, please? पहले तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी